Hmm. And when we meet people on a regular basis, talk to them on a regular basis, Hmm. then they see your work, they see you, Hmm. they inquire about your work. That kind of really helps, Hmm. right, in generating referrals. But sometimes people come with a very small requirement for themselves. And then if you do a good job, then Hmm. they're really happy, and they refer you to Hmm. bigger and bigger people. So that has actually helped us uh, to develop into an agency model. When I joined, I started off with networking pre-COVID. I was just one and one more junior writer. That's it. Today we Okay, very small, started are very, very yeah, small. today we are a dozen at least. Okay. So, like now here also, whatever we are meeting. So I know what Govardhan ji is good at, what Prashant ji is good at, what Mansi is good at. So Hmm. I know, and when they talk, there's a trust that builds. Uh, Yeah. so that is one thing, but there is another downside of it is it is not easy to network. There Hmm. is a lot of things running in your mind. वो क्या सोचेगा, हम कैसे दिख रहे हैं, हम क्या बोलें, do we sell, do we pitch, do we inquire about them? Hmm. And many times I feel in that hesitation I don't network also. Yeah. Sometimes you think some guy, other guy is very big or something. I don't know how he will respond. Is that you're saying? Yeah, that also, and we are also judging ourselves, right? Hmm. 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 Okay. Okay. What do you think? In networking, did you try various platforms, or you stick to one or two? Because that is also most of the people don't understand. Like, no? Should I go there? Should I go here to the events? Or even many people even actually ignore the simple WhatsApp groups also. I think uh, though in-person networking is very, very powerful, and I definitely say that nothing can beat it. But there are many other options where I think people are still not utilizing it properly. What is your say on that, Akansha? See, I would say is having. So what happens when you are in a networking group? You cannot always Hmm. be like asking for business, Definitely. Hmm. Hmm. right? So if I have to give you or somebody reference, Hmm. I need to be part of different Hmm. Hmm. groups Hmm. Hmm. so Yeah. that I'm connected to more and more people. Okay. So I am part of BNI, I'm part of TI, I'm part of FTCCI. Uh, I'm looking at to join a couple of more like Flow and all. Okay. I don't think sticking to one helps, because one thing is you become too engrossed in that and start a voluntary works, which also takes a toll. When you're in multiple things, then you're able to manage also. You are managing your energies Hmm. in all directions. Okay. So one more thing I want to ask is like, do you think hanging in, like many people have a misconception, or what we say, there is a kind of thought process which goes into it. Why should I actually hang out in market type groups? I'll not be getting any business. So what is your say on that? See, now I don't know which group Saga put that message, SAC code for content writing paid ads. Hmm. Prashantji replied. Hmm. So all this who will tell? Okay. Everything, I feel everything everywhere, just don't go to do business. Hmm. I mean, Hmm. I have had, like, I'm a part of Rotary. I'm clear ki I think that is not somewhere where I want to actively pitch, you Hmm. know, Hmm. about work. Like in niche marketer also, I don't really actively pitch. Hmm. People know, they come. That's Hmm. here it is more about exchanging information, Yeah. knowing, learning kind of a thing. It's not about making money from niche marketers for me. Yeah. So net so the groups also we need to define. Networking is just not that, for leads. Although the topic is networking for leads today in our Zoom call, but I don't think we should stick to. Matlab, after a time people get a feeling, "Arey ye aa gaya, ab ye becega." Exactly, exactly. I agree with you. And definitely what happens now when you're always there hanging out, helping people or responding, you'll actively be available.
some people expect that you get a lead without even doing anything in the group. But instead of that, if you are actively talking or just responding to people's comments sometimes, that also can make people see who are you, what are you doing. And sometimes they reach out to you in personal window and then start conversation. It can lead to something else. So I agree with you, Akansha. I also want to know, ask Sumant, who has also joined. And I know Sumant I have met Sumant, he has been to Hyderabad. Though he's from Ahmedabad, correct me if I'm wrong, somewhere I'm using the wrong place or something like that. But Sumant has been an active networker. He has recently been to Thailand, or what is that? Dubai. Bangkok. Bangkok. Yeah. Bangkok, and also recently went to Kochi, I think. Kochi, you have been Yes. Kerala. Yeah. Kerala, and he's also some time ago in Bangalore. So he's actively been a part of a different kind of networking thing, like maybe WordPress boot camps or something like that. Yeah. So what is your take on networking, Sumanji? Like, how do you define how should actually people utilize this? Like networking agencies, are agencies really doing enough networking, or are they doing it the right way or not? What is your opinion, and how do you think? Like, what is your take on, like, especially attending events? Like, you're going to Bangkok, that's a big deal. Like, Yeah. of course, if people say, like, yeah, people may think like someone is combining pleasure and works. If the name comes as Bangkok or Thailand or something like that. But I know someone very well. I have been, we are actually having a dinner or this thing, and he has brought food from his home basically. He doesn't even eat food outside. Like, that is the kind of person I should actually respect, or no, what we say, that kind of discipline. It's very tough for me. Like, if I don't get biryani 1 week, there's a fight in the house. So once I want to ask you actively, like, um, now I want to share I want you to share your thoughts on networking. Why is it important? And if it is not giving you immediate returns, but what is it in? What is it more? What is motivating you to do that? Like going out, actually crossing the country. You're crossing the country to do that, and you're not a very big agency. You're starting up and you're doing good. I know, but still, I don't think your agency is able to pay you for all those things. Yeah. What's your take? Yeah. So for me, networking is getting more insights and understanding different challenges for different industries and businesses. Now I am into content creation and all those things. Now, if I say that, okay, if I have to write for a specific industry, so I have to sit for a 4 hours or 6 hours for that, and I have to research about that. Why don't I attend some conference specific to that industry, and I get some insights, so that next time when such clients come from that industry, I will save a lot of time. Okay. So this is what happening right now. I'm working in different industry, like 3 industries, that is travel, wedding photography, and IT industry. So now, well, while I'm working on ongoing projects or upcoming projects, it is saving me a lot of time. So that I can start with something new that I want to do. Right now, I'm working on 2 podcast channel launch. One is in local language and one is in international English language. So that why I'm getting that time to, because even podcasting is not an easy task. You have to do a lot of things in that. But why I'm getting that time? Because I'm attending events and I'm getting insights from the people. And secondly, see, attending and networking is not just exchanging of ideas, but if we are very clear, if we have one target in our mind, or one or two things in our mind, that okay, I want to attend or want to go for this particular conference with 2 reasons or 3 reasons, that will give you more insights, that will help you in a better way. Let's say for next 4 months or 6 months, and don't go for, if you're going for a international or within India also, if you're going for a conference, don't think of building a relation of, let's say, for 2 years or 3 years, but think of something a shorter time. In next 4 months, what can I get from this conference?
Okay. So that way, when you're, having a timeline for yourself, you will see that you are growing your to the next level. Mm-hmm. Yeah. So these are some of the experiences that I have to say. Okay. Thank you. I think that's really worth it. So one follow-up question to that is, let us say you went to the event in Bangkok. It's WordPress. It's a event by WordPress or something like Yeah, that. a WordPress conference. Yeah. Okay. So what did you have in your mind when you're preparing for that big event? Because ultimately you're spending a lot of time and money Yeah. to Yeah. do that. So how did you prepare for that event? Like what was the if you can if you're free, if you're open to share it, it Yeah, will be sure, great. sure, sure. So what I do is I identify few people to whom I want to meet, Okay. or I want to network with. Now, Okay. I'll give you a very good example about Bangkok. So in my mind, I had that, okay, why I want to go to Bangkok? Because I want to have collaboration for my podcast, because Okay. it's on WordPress specific. So while I went to Bangkok, I met people who are doing podcasting, and I came to know from them that there are WordPress, specific podcasts going on, but only 99% are in English. One is Okay. in Spanish language, and Mhm. no other languages like in any Indian languages. So I Okay. am starting in Gujarati language. So when Okay. they came to know about this, they said, okay, you are doing such a great work. You're going to start something new. We are there for you. We will support you, and we will promote for yourself also. Okay. So, and I also met people from GoDaddy official team, and Hmm. even they said, okay, this is a good thing you are doing. We are ready to help you. We are ready to promote in whatever way we can. And many other companies also were there. So when Hmm. they come to know, okay, you are doing something new, it's great that we are supporting. We'll support you, but you must have something in specific, or you need to have a list of people whom you want to meet, because there are 500 there were nearly 1200 to 1300 people attendees. But if you want to meet some people, take a group of, like, let's say 20 or 25 people, list them down, and just mention all the agenda that you want to take with them and discuss with them. Yeah. Hmm. Got it, Sumant. I think one thing I'm able to take away from what you're saying is, if you have an interesting initiative along with an agency, because what you do for your agency is not allowing you to stand out completely. Maybe something you are also adding the always I'm seeing you talking about a podcast. Like from the last 1 year, I'm seeing that talking about a podcast. So like people maybe they will find it interesting because agency work may look like you're also doing something which most of the other people are actually doing. So maybe Very that is a one takeaway I can take from you, that at least if you have something interesting to discuss with others, like Yeah. when you say like I'm a content marketing agency and I also run a podcast about WordPress in Gujarati. Yeah. Then this content marketing agency thing is there, but along with that, this will actually attract people. Like, oh, you do this also. This is interesting. So Yeah. sometimes, or else if you have something very specific as an agency, also if you do something very different, maybe Yeah. that's possible that they stand out. So this is Yes. an interesting takeaway when you're going for networking. Also bring out something which is very unique about you as a person. Yeah. Maybe sometimes it may not be relevant to exact digital marketing or something. Some Yeah. people may be a part of pet protection, something, or other community, or they're building something, they're volunteering something. Because in communities and networking means I see people coming from various backgrounds, various intentions. So I Yes. think having this one more angle can help. This is one more takeaway. I'm noting down. By the Yeah. way, whatever everyone is telling, I'm trying to note down one or the 2 points. Yes. And what Sumant was telling is about the industry insight. That's an interesting thing. Yeah. So I would like to check with Prashant if he wants to add some insights, or maybe not sure if he is. So be I'll hold my reserve comments. I want others to go forward. Okay, sure. Thank you for giving this opportunity, but like to hold it back.
No. I also want to hold it back, but because I know that we'll get a lot of insights from you as well. I'm very नहीं sure. ऐसा कुछ नहीं है. I can see Pankaj, Mansi, Akansha, a lot of great networkers there, and few I don't know personally, but I'm sure all of them are. So let's hear from them first. Yeah, sure. Okay. Let us check with Pankaj ji. Pankaj ji, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? Yeah, so for me, basically, networking is all about building relationships. And I believe that business is only a byproduct of that. Hmm. Okay. And if you have educated your fellow network associate properly about your niche, Hmm. business can happen, and it does happen. In fact, 80% of all my business comes from purely network. Yeah. So, Pankaj ji, like I very well know you that now you try to be in places, though like you have been in the industry for quite some time and you still actively participate and comment. What is your suggestion to newbies? Because there are many freelancers out there who I think generally they're not networking enough. Like what makes you to, because you're a very senior person, I know your business, a lot of business comes out of niche marketers, doesn't come in niche marketers groups or something like that. But I still see that you're active and you're actively participating and stuff. So what is your say on this? Like why freelancers who are there in the group should actually take advantage of networking in the WhatsApp groups or communities or forums whatsoever? Yeah, I mean, especially if you are relatively new in your field and you don't have too many contacts, and especially if you're a freelancer, specifically if you're a freelancer, Hmm. and I think it makes a lot of sense to be part of some good networks which are there. Yeah. And once what the problem is that many people when they join a network, they only join with one specific goal, and that is मेरे को धंधा कितना मिलेगा इससे. Let me get business. So that is not a right way to approach for networking, because networking is about building relation, and you'll never build a relationship if you're seen as a person who's a hunter. कि भाई मुझे धंधा ही चाहिए. You're all the time pitching for your product or services. Hmm. People get fed up of you and they will stop even looking at you or talking to you or networking. But let's see if you can help somebody, in your network. Start with the attitude that I would like to help somebody. It doesn't have to be always by giving him a free product or service, but you can give him some help of some sort, which would help him, guide him, mentor him, whatever. Hmm. And I think once you are seen as a person who's a giver, who's a helper, who's, not having a very ulterior motive, so to speak, then that person starts trusting you, Hmm. Hmm. is more receptive. And then that's how you, slowly come on, build your relationship with that particular person. And then once you have also educated him on what you do, Yeah. without sounding like, oh, I want your business, you just educate him. Well, yeah, these are the services I offer. These are what I'm very good at. See, many people are doing many multiple, products or services, but you cannot be good in every single one of them. You have to, like, as our group name itself suggests, we are niche marketers. We have a particular niche which we are good at. Yeah. And even if you look at agencies, they may say, I'm a one-stop solution, all services under one roof. I've rarely come across any agencies who's good at every single thing. Yeah. Somebody may be very good at SEO, somebody will be very good at Google Ads, somebody will be fantastic in social media, somebody may be doing growth marketing, performance marketing. Yeah. Okay. So whatever you're good at, just focus on that, educate your fellow network members. And if you're good, your business will come. There is no doubt about it. And I can say it because I've got more than now 15 years of uh, experience of being member of some of the biggest and the largest network groups in the world, not Okay. India, world. So like, for Hmm. example, I'm a member of BNI. Hmm. So if you know BNI is the world's largest business networking company. Yeah. Okay. So I've been a member of BNI for many years, and I've got lots and lots of business. And I've always believed in one thing: first give, then you receive, which is Okay. also the philosophy of BNI.
The first give, then receive. That's interesting. Yes. Yeah. It's called the giver's gain principle. Yeah. Definitely, I think people now generally like most of the people, we all don't like to be sold to. Like we always want Correct. to take a Absolutely. decision, conscious decision. So in the process, whom we recall first is the person who has actually helped us in that specific thing. Absolutely. First, Absolutely. that person, we recall that person as the first point of contact. So, Absolutely. and it's coming from people like you, no? Especially I feel really, really happy about seeing people like you who are very senior, like Aap hai, Prashant ji, Mansi. There are few more guys. I'm not saying that others are less or more, but I'm seeing you people are already having an established agency, established things, but you still spend time to attend meetings, and that gives me a lot of motivation to actually do more with the club and the community things. So I just want to make this thing happen, and like you actually told about the specific thing, like uh, people don't see marketers as a competition to you. There's a huge possibility of collaboration, and with all the disruption coming up, I think it's always going to be an issue that not one agency can do a lot of stuff. Now everything is picking at a rapid speed, rapid disruption. So, like what you said, Pankaj, thanks for adding that very crisp definition of networking and how do you do it, the relationships and all. Thank you very much for that, Prashant, Pankaj. You're welcome. Well, Okay, let me check out with uh, Gautam. Do you want to add your thoughts? Because Gautam also has been active, not all the time, but he's active. Thank you for the opportunity first, Gordon sir. Like most of my networking happens on Facebook with regarding to digital marketing. As you know, I have two businesses. I am also into food processing industry. So in that vertical, I make networking with these business groups. I am a part of Rotary Club, and I am also in various industry bodies like this MSME groups, then Lagu Udyam Bharat, and such Chamber of Commerce and Industries. So there I will get some leads, B2B leads, that will help me in both purchase and sales. Okay. Okay. And coming to this point, digital marketing, most of my networking is on social media. I am part of many groups in social media, like digital marketing practitioners, niche marketers. So majorly, I am into content writing and blogging. So what I get is I get a lot of solutions from groups, interacting with people. Especially, I post any question and people answer it in niche marketers or any other groups. And also, I got some good deals regarding tools with niche marketers. So that is the fruitful outcome of the networking what I'm getting from this domain. Okay, yeah. Thank you, Gautam. Mansi, do you want to add to the discussion? If you're available. Okay. Hi guys. Hi, Mansi. I'm the worst person for this particular topic because I'm a hermit introvert. Hermit What is that? extrovert, actually. I'm a hermit extrovert, so I like to stay in a bubble. And to be honest, I'm not a very good networker. And I don't keep in touch and things like that. And I don't think I have what it takes to be able to network well. Because I'm shy, I don't like to make the first move. There are a lot of other things which I feel hinder me. That's the reason why none of these groups really work for me, because I don't know what to do with myself there. No, but you have been active. You have been active with our group at least. That's what I can confidently say. So what I did realize though, is that it works well for me when the groups are smaller. Like even when for agency groups, for example, this one, it worked for me only because the group is small, people are interacting with each other, there is some sort of learning curve which is happening. What doesn't work for me are the conferences and the events, the in-person meets, saying network with each other. That doesn't work for me. BNI never worked for me. It was too much pitching, less of
getting to know each other, those kind of things. So that never worked for me. But I guess as a person who knows, you have to know yourself to be able to know where you can do what. So while I help people a lot in different other ways, and I get my business through there, it's not the traditional form of networking that you would say. Okay. So yeah, but I did learn quite a bit actually from quite a few people here. So what Akanksha mentioned and what Sumant mentioned, I never realized that you could be so targeted and go and meet people and discuss things. So because it's not something that is my domain. So Yeah, that was quite interesting. Free flowing. Yeah, that was quite interesting. So I would love to hear other people talk more than me in this. No, actually, particular once session. you told about one thing specifically right now. Like you said, I still get business by helping people out. What is that Yeah. you're trying to say? So what I noticed a lot of times that no matter what part of group I was in, whether it was, I would just try to help people out. So it was not the traditional form of like I said, if you're in a room full of people where they say network with each other, like it's networking time, wo mere se nahi jamta hai, you know. But if you're having an interaction, a discussion, and someone says, "Oh, mera ye problem hai, kaise solve karte hain?" Then I'm the first one to raise my hand if I know the solution or if I have tried something and I can share that. But that ekdam, the BNI type of thing I cannot do. So in some form, you have to know yourself when you're I get lots of leads from for my agency from other channels. So besides referrals, I also get it from LinkedIn. I get it from various other places when it's a very weird thing to say, but when you're talking, I work with a lot of corporates. Okay. And there is a good balance. Someone who was a US guy once told me, he said, "You're such a good balance of personal and professional." So when you have that little touch of personal conversation along with professional, there is a connection that happens. And that gives me that's my strength. And that's where I push for things. It comes naturally to me, so I use it naturally. Right. And that gives me more and more leads. So every time a person moves, every time someone says, they're like, "Oh, Mansi can help," even if I cannot. So they'll turn around and say, "Oh, Mansi will be able to help you." So that's how it works for me. That is the kind of network that works for me. It doesn't, the traditional form does not work for me. Yeah, I think maybe I'm doing it wrong, but no, but definition, I think it's not about, I believe also what's happening with the new new technology and new things. Of course, what you said is like not everyone is like actively talk about business or not pitching. Some people are very poor at pitching, like myself. I'm not very good at pitching, but of course I sometimes subtly try to share about myself, what I do and all. But generally I also not very much into hardcore pitching, but some people do it very nicely. They do it very classy way, like they sell it off. They straightforwardly tell, this is what I offer, this is what I do and all. But they do it like that is in their blood. So that is a different thing. I also don't have that. But I think things are changing with what the new technology, because nowadays what's happening in the olden days, I see like people used to not reveal anything before they sell something. Like you say, you need to take the service to know the information, how we do it or something. But nowadays, you see, we reveal half of the things before itself to the clients. that's also because YouTube channels are teaching everything. So you are now supposed to do it actually. We can't be like very silent or we don't help. Yeah, that's interesting. So what I'm observing is like people, especially with agencies, I'm seeing there are two channels which are very much prominent. One is referral and one is networking. That's the reason I was trying to open up this topic. So I think let us also hear from the maestro, Prashant ji. नहीं ऐसा कुछ नहीं, एक तो पहले ही सर पे चढ़ा देते हो। सर पे चढ़ाना पड़ता है सर, बिकॉज यू आर एक्टिव नेटवर्क राइट नाउ, मुझे पता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ कुछ ही चीजें बोलूंगा। आई एम श्योर पंकज जी ने जो बोला और जितना मैंने आकांक्षा का अमेज्ड, बट जिसने भी जो भी बोला यहाँ पे एवरीथिंग इज रिलेवेंट। बट मेरे एक मेंटोर थे, नाम तो क्या ही बोलूंगा, लेकिन एचटी के हेड रहे हैं वो ऑल इंडिया
हिंदुस्तान HT. टाइम्स के सेल्स एंड मार्केटिंग के. What is HT, sir? HT? हिंदुस्तान टाइम्स. Hindustan Times. Okay. Okay. हाँ, हिंदुस्तान टाइम्स. एंड मेंटोर क्यों बोलता था मैं उन्हें, बस इसलिए बोलता था क्योंकि वो गाली गलौज बहुत अच्छी कर लेते थे. तो ही टेक्निकली न्यू हाउ टू गेट द जॉब डन. Okay. ठीक है. तो मैं बहुत सारी चीजों से अग्री करता हूँ, बट मैंने जो सी दैट वाज नेटवर्किंग मींस बीइंग प्रेजेंट, एज वी ऑल कॉल इट टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल. तो जब भी कोई ब्रांडिंग के बारे में बात करे उसे प्रशांत का याद आ जाना चाहिए, बस दैट इज द होल नेटवर्किंग. एंड अनलाइक मेनी ऑफ द पीपल हियर, I don't shy away in pitching my business in very first 30-second elevator pitch or whatever time I get. Because मैं धंधा मांगूंगा ही नहीं तो मिलेगा ही नहीं, सब सोचते ही रह जाएंगे. This is my funda. I'm not saying it is wrong, it is right. But मुझे लगता है जहां मिल रहा है, जहां अपॉर्चुनिटी है, वहां बोलो कि भाई मैं करना चाहता हूँ, let's do it. And if I can bring something valuable on your table, then why not? What is the harm in pitching? I think I've been through BNI also, and Pankaj is very active in BNI. But one thing I liked about BNI is that nobody minded talking about business very directly. And I think that could be one big takeaway for everybody कि भाई कहीं पे भी कोई मिल रहा है और आपको लगता है कि ये बंदा से बिजनेस हो सकता है, तो बोलो कि I would like to talk business. Maybe this is not the right place, but we'll talk. What is the harm? उसको intention तो clear कर दो ना कि मेरी है intention. Yeah. So for me, networking is all about just it's a very simple fund. Everybody is a marketeer here कि कुछ impressions होंगे, impressions में कुछ percentage click होगी, उस clicks में कुछ percentage conversion होगी. So increase your impression. As simple as that. Yeah. Go out, meet more people, make new friends. And हमारा service sector ऐसा ही है. People especially when you're charging an amount which is just not maybe at very low rock bottom price, then people need references to believe in you. Even to pay you some amount of advance, or when you ask for 50 or 100% amount of advance, then you should have a sufficient supporting and backing. And for me, networking is also about reference. आज एक client आया मेरे पास, apparently उसने बोला कि मेरे को ब्यूटी लेब मतलब कॉस्मेटिक्स का स्टार्ट करना है, दिस दैट. बात होते 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 उसने बोला अच्छा मेरे फादर कॉपर में है. मैंने कहा अच्छा कॉपर में आप उनको जानते हो, उनको जानते हो, उनको जानते हो? हाँ जानते हैं. आप पीछे से कहाँ से हो? हम पीछे पुरानी दिल्ली से हैं. पुरानी दिल्ली में आप उनको जानते हो, उनको जानते हो, उनको जानते हो? हाँ जानते हैं. तो बाय द एंड ऑफ इट काम मैंने क्या पिच किया कॉस्मेटिक, उसने क्या लिया कॉस्मेटिक, नहीं पता. लेकिन अब हमें ये पता है कि हमारे 8-10 कॉमन ऐसे नेटवर्क्स हैं which can be trusted. तो क्लाइंट कहीं जाएगा भी तो शायद घूम फिर के वापस आ जाएगा अगर खुश नहीं हुआ तो. So this is, I believe, is all about networking, knowing more people, and just stay true to your business and not shying away of your business. There are many people who come to me only because they know that I intend to stay in the business for next 20-30 years and I can grow with their company. That's also a crucial factor. So it's all about putting you yourself across. This is what I feel about networking. I don't feel कि मेरे को जरूरी है कि किसी को जाके हेल्प ही करना है. अगर हो सकती है तो करो. That's human nature. I truly believe गिवर्स गेन का तो पता नहीं, बट यस कर्मा इज देयर. मैंने बहुत लोगों ने मेरी हेल्प की है, मैं कोशिश करता हूँ आगे उनकी हेल्प करूँ जिस भी तरीके से होता है, चाहे बिजनेस देने में, क्लाइंट देने में. इस ग्रुप में भी मैंने बहुत लीड्स दी भी हैं, ली भी हैं, बिजनेस भी कन्वर्ट किए हैं, कर भी रहा हूँ डेली. एंड इट्स ऑल अबाउट दैट्स हाउ पीपल बिल्ड ट्रस्ट. आज की डेट में मैंने जिन लोगों को लीड्स दिया है उनसे ये भी डिस्कस कर लेते हैं मेरे घर में पेंट हो रहा है, क्या करवाऊं, क्या चल रहा है. That's networking. That's when core networking happen. Not that कि इवेंट में मिले, निश मार्केटियर की मीटिंग में मिल गए. When people are telling you about their dating experiences, that's when you network. So that is when you make people comfortable. और वो किसी भी बात से हो सकते हैं. जरूरी नहीं है कि आपको कुछ polished बात ही करनी है. It's just about hitting the right nerve कि उस वक्त वो क्या सुनना चाहता है. Everybody knows in this group that I was recently looking for a UI UX designer. I connected with somebody. She's an expecting mother.
I told her few things, हमने बात की, हमने बच्चों के बारे में बात करी, सब कुछ बात करी, and that is how she pretty much not only agreed to work for me, but she agreed to work 12 hours a day, 7 days a week for Okay. next 3 weeks. I Okay. believe that that's where networking comes in. Mm-hmm. So for me, this is all about it. This is how I take networking, and it should be mutual respect. That's the biggest thing. You're a The master intention negotiator. business की है, but ऐसा नहीं है कि disrespect के साथ. Yeah, definitely, Prashant. I agree, and I think you're a master negotiator too. उसमें भी हमको शायद एक सेशन करना चाहिए. But I'll have 2-3 more questions to ask you specifically, and also others can also add to this. Prashant ji, what do you think? Like people, so whoever is networking, whoever is trying to, like, how you choose, because it's a challenging thing. We all have limited time now. Not now, anytime. Like we all have limited time. So how you choose to like be actively participating in specific groups, forums, or networking places wherever networking can happen. So what is your way? Like how you choose that? That is something like many people struggle. Should I spend my time here or there, or what? What is your mantra for that? I don't know. Maybe I'm little less fortunate here क्योंकि मेरे पास तो ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज तो नहीं होती कि मेरे पास डेली 10-10 इनविटेशंस हैं और मैं चूज कर रहा हूँ. ऐसा नहीं होता है मेरे साथ. आई डोंट नो कितनों के साथ यहाँ पे होता है कि डेली के 10 इनविटेशंस हैं, और अगर डेली भी आप 1-2 घंटा 3 घंटा दे सकते हो किसी को तो क्या प्रॉब्लम है. एंड अगर आपके पास बहुत ज्यादा काम है देन एज वी ऑलवेज से डेलीगेट ना. हमारा काम तो नेटवर्किंग ही है. वी आर एट द टॉप ऑफ द एजेंसी पिरामिड, या जिसे भी आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोलोगे. तो हम लोग का काम ही क्या है, और प्रैक्टिकली मेरा काम क्या, डिजाइन बनाना है, स्ट्रैटेजी बनाना है. फिर तो मैं और फ्रीलांसर सेम ही हुए. इफ आई एम सेइंग आई एम एन एजेंसी, तो मेरा एक ही काम है नेटवर्किंग, एंड आई विल गिव इट टू एवरी पॉसिबल मींस आई कैन, अनटिल अनलेस ऐसी सिचुएशन हो कि भाई हाँ लिटरली मेरे पास 20 इनविटेशन है. मेरे पास तो नहीं होते. मुझे नहीं पता इस ग्रुप में अभी जितने 8-10 लोग हैं कितनों के पास दिन के 10-15 इनविटेशन होते हैं. नहीं होते. Invitation in the sense, what do you mean by invitation? Like, is it like a event or आप कहाँ नेटवर्क कर रहे हो, कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास, Okay. कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं. जस्ट प्लान इट आउट कभी बैठ के कि क्या हमारे पास मोर देन 30, 40, 50 अपॉर्चुनिटीज हैं महीने की. Okay. तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है. एवरीबडी इज मूविंग इन अ लिमिटेड सर्कल. और मैंने रियलाइज किया दुनिया बहुत छोटी है. दुनिया बहुत छोटी है. Yeah. जस्ट डोंट हैव टू यू नो. आई फॉलो वन फंडा. मुझे नहीं पता ये बहुत ही वेग हो सकता है. जहां मुझे मजा आता है मैं जाता हूँ. I Okay. enjoy being with people, and if people are nice, I just enjoy being with them. मैंने कभी ये सोच के नहीं किया कि यहाँ से मुझे बेनिफिट मिलेगा. And I have found love in literally hopeless places. Literally hopeless places. आप सोच भी नहीं सकते वहां से धंधा आएगा. तो एक एग्जांपल तो बताइए, सबको मजा आएगा सुनने में. बहुत मतलब ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हैं यू नो कि आई कैंट इवन टेल यू कि मैंने पिच किया 100 रुपया. अगला बंदा मुझे बोल रहा है कि भाई मेरा तो 5 रुपए का ही बजट है. कोई बात नहीं भाई, नहीं बनी डील, ठीक है. होली दिवाली होता रहा. एक दिन बोला अरे मेरा एक भैया है वो बहुत अमीर है, उनका 200 रुपए का बजट है. एवरीथिंग कवर्ड. या मैं नाम से ही बता देता हूँ. आज ENY के टॉप लोग हैं, टॉप शॉर्ट्स में से आते हैं के मेमानी. एनीबडी हु नो अर्नस्ट एंड यंग वुड नो के मेमानी. Okay. Their family came to me several times for several businesses, and we could never convert them. Okay. We could never convert them. But recently they have sent us 4 different businesses. Okay. And just references. Hmm. And with their own good word. Now, if they are somebody in Ernst and Young, it matters. Yeah. And their good word also matters. तो कुछ तो रहा होगा ना. बिकॉज इट इज ऑल अबाउट कि एक ही रिकॉल क्रिएट करना है कि ब्रांडिंग है तो प्रशांत है. कुछ सोचना ही नहीं. कोई भी पूछे आपसे ब्रांडिंग किसको देनी है, प्रशांत को देनी है, बस खत्म. Okay. That's all. In fact, funniest would be my ex-girlfriend referring me. Yeah, definitely, Sanjay. I see you active in networking. हमारा ग्रुप में भी काफी एक्टिव है. So that's the reason I actually I was choosing you
to talk about these things. So I would like to means ask others also to add to this, or if you have any questions or any thoughts. And Roshan, I think, has joined now after quitting and joining and all. I'm not sure if he's again gone. अभिषेक एंड नीलेश जी दोनों है बात करने के लिए. राजगोपाल भी है. So अभिषेक, नीलेश जी, do you want to go first? Yes. So actually इसमें दोनों भी हैं, ऑनलाइन नेटवर्किंग, ऑफलाइन नेटवर्किंग. तो जैसे बेसिकली यार नेटवर्किंग तो ऐसे नाम हो गया, राइट? तो ऐसे कुछ ग्रुप्स है जहाँ पे रेगुलरली जो मैं थोड़ा सा उल्टा बात करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा हमको रिवर्स ट्रैकिंग भी कर लेना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा मार्केटिंग एजेंसी है और मेरा एक सर्विस है, लेट्स से आई डू B2B लीड जनरेशन, ओके, ये मेरा सर्विस. तो मैं देखूंगा कि यार चलो ठीक है, मेरे कस्टमर्स, आइडियल कस्टमर्स कौन है. जैसे मेरे आइडियल कस्टमर्स वो है जो मुझे मे बी मंथली, लेट्स टेक वन एग्जांपल, लेट्स से 50,000 रुपीस पे करते हैं, ओके. तो मुझे पता है कि अच्छा ये 50,000 पे करने वाले B2B बिजनेसेस का रेवेन्यू क्या होना चाहिए, लाइक मे बी उनका एनुअल रेवेन्यू क्या होना चाहिए. मतलब उनको उनके लिस्ट में ही है कि ओके, आई विल इन्वेस्ट दिस मच ऑफ मनी टू ग्रो माय बिजनेस. ओके, लेट्स से एक नंबर लेते हैं, लेट्स से businesses those who are doing, let's say, more than 25 CR per year, let's say. Okay, very simple. Okay. Just a minute. Yeah. So अगर हमने देख लिया कि अच्छा ये मेरे सारे बिजनेस है, और अभी हमने देखा कि अच्छा ये बिजनेस सारे हैंग आउट कहाँ पे कर रहे हैं. ओके, तो जैसे कि हमने एक एजेंसी के साथ किया था, उनका एक ग्रुप, आपने एड्स वगैरह भी देखी, तजुर्बा करके एक ग्रुप है, जैसे BNR वगैरह कैसे रहता है वैसे ही है. ओके, तो इसमें बहुत सारे बिजनेसेस या तो ये ना, एक आपने एक बहुत सारे इनके एड्स देखे होंगे, तजुर्बा करके, बहुत एज ओल्ड ये है, बिजनेस कंसल्टेंट है. हाँ, बिजनेस कंसल्टेंट है, थोड़ा उनका एज ज्यादा है. तो जैसे एक मेरे फ्रेंड की एजेंसी थी, तो वो स्टार्ट ही किया था उन्होंने. तो उन्होंने क्या किया, उनके साथ टाई अप किया. अब बेसिकली अभी क्या है ना, इनके साथ जाने के लिए ना कुछ पैसा भरना पड़ता है, लाइक यू कैन नॉट गो एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट. तो कुछ एक अमाउंट ऑफ फिगर आ गया. ओके, चलो लेट्स टेक एग्जांपल, लेट्स टेक 1 लाख रुपीस. तो अभी हमको पता चला कि अच्छा है कि हम जब 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वी विल डायरेक्टली गेट द नेटवर्क ऑफ, लेट्स से, at least 100 businessmen who are having revenue of more than, let's say, 25 CR, and they might need such kind of business. और वहां से अगर हमको अगर हमको वहां से 2 से 3 कस्टमर भी मिल गए, तो एक तो रिटर्न आ गया. लेट्स से हमने इन्वेस्ट किया, राइट, 1 लाख रुपीस जस्ट फॉर द नेटवर्किंग, लेकिन हमको वहां से वो आ गया, रिटर्न आ गया. और अभी जैसे सर ने भी बोला, प्रशांत जी ने बोला कि अगर वो भी नहीं आया ना, तो वहां से एटलीस्ट रेफरल तो आ ही जाएगा, प्रोवाइडेड आप उस ग्रुप में, अभी आपने इतना पूरा सब ये पूरा सब रिवर्स इंजीनियरिंग कर लिया. लेकिन अभी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी पंकज सर ने भी बोली, कि जब हम ऐसे ग्रुप ज्वाइन करते हैं, तो डेफिनेटली वहां पे जाके हम फटाफट जाके ये मेरी सर्विस है, ये मैं B2B लीड, ये नहीं कर सकता. बेसिकली वहां पे जाके हमको इवेंचुअली हमको वहां पे वैल्यू ही देना पड़ता है कि यार कैसे मार्केटिंग के थ्रू हम बिजनेसेस को ग्रो कर सकते हैं. इन जनरल वी हैव टू टॉक वेरी फ्लैट, लाइक ऐसा बहुत ज्यादा है कि मैं आपको ये करके दूंगा, ये बोलने की कोई जरूरत नहीं है. वहां पे उनको अगर सोल्यूशन भी देते रहे हम बार बार कि हाँ, हम ऐसे B2B बिजनेस को ग्रो करने के लिए ये नया नया तरीका मार्केट में आया है, तो इवेंचुअली वहां पे उनको जब पता चला कि हाँ यार, अगर B2B बिजनेस को अगर लीड जनरेट करना है, तो ये पर्टिकुलर पर्सन है या फिर ये पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट है, दे आर गुड एट इट. उनके पास है ना कुछ नए नए तरीके होते हैं, और जब भी मिलते हैं महीने में 1 से 2 बार, वो कुछ ना कुछ तो हमको नया बताते रहते हैं कि यार ये देखो यहाँ से ये आ गया, ये देखो ये कुछ लिंक्डइन से हमने कुछ किया था, ये देखो हमने व्हाट्सएप से कुछ किया था, और हमने इस पर्टिकुलर कस्टमर को हेल्प किया. सो जब हम एज अ वैल्यू जब क्रिएट करते हैं, तो डेफिनेटली उस नेटवर्किंग ग्रुप से हमको हमारा रिटर्न तो आ ही जाता है, और डेफिनेटली एक अच्छा एक कनेक्शंस बैठ जाते हैं. ओके, नंबर 2 है
कि अभी ये हमने फॉर्मूला किया। वेब अस्त्रा हमारी बॉम्बे बेस्ड एजेंसी है, मेरे दोस्त की है। ओके, आई एम जस्ट पार्ट ऑफ लाइक फ्रेंड सर्कल में थे, मेरे साथ काम करते थे, उन्होंने बाद में जाके एजेंसी स्टार्ट किया था। सो जब हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, डेफिनेटली हमारा रिटर्न तो आगे आ चुका है, लाइक वी गॉट द रिटर्न। एंड आज के रेट में लाइक वी हैव इनफ कॉन्टैक्ट्स जो एक हम बोल सकते हैं पाइपलाइन में है, लाइक आज नहीं तो कल वो कन्वर्ट होंगे, बट उनके वहां जाके बात करना और वहां उनको जाके हेल्प करना, हेल्प एज इन लाइक कुछ डिस्कशन में अपना प्रॉब्लम रखते ही है कि अरे हमारा ये प्रॉब्लम हुआ, तो वी डोंट नीड टू नेसेसरीली पिच देम राइट अवे, जस्ट एक हेल्प करके दे सकते हैं कि अच्छा देखो शायद ये इस तरीके से सॉल्व होगा, या फिर आई नो समबडी हु कैन हेल्प यू, लेट मी कनेक्ट दैट पर्सन टू यू। ओके, तो वैसे अगर हम इन जनरल, अगर हम जो एटीट्यूड, जो गिविंग एटीट्यूड की बात कर रहे थे सर, पंकज सर, तो वो डेफिनेटली लाइक एज अ गुड बिजनेसमैन और एज अ गुड नेटवर्कर, वी ऑलवेज कीप कि यार मैं इस बंदे का किस तरीके से अच्छा करूं, और इवेंचुअली दैट गिव्स यू रिटर्न। और वो हमको एक अच्छे खासे कस्टमर मिल गए जो हमको लाइक मंथली एक अच्छा रिटेनरशिप देते हैं, लाइक 3 लाख मंथ का रिटेनर उन्होंने देना चालू कर दिया है, और चल बहुत टाइम से कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट तो हमारा 1 लाख की था, एंड दैट इज दिस जस्ट वन कस्टमर। तो उसके साथ और ऐसे 4-5 कस्टमर आए हैं जो उन्होंने एक अच्छे तरीके का, अच्छे लेवल का, अच्छे अमाउंट का बिजनेस किया है। तो एक तो वो है कि किस तरीके से नेटवर्किंग हेल्प किया, बट नंबर 2 इसमें ना क्या हो जाता है, जैसे हम अभी 1 साल से कर रहे हैं हम, तो मैंने उनको क्या बोला कि यार देखो मतलब इवेंचुअली क्या होता है ना, व्हेन यू आर इन द ग्रुप ऑफ लेट्स से 25 सीआर रेवेन्यू जो करते हैं, वो सिमिलर टाइप का ही बिजनेस देंगे। नोबडी विल कम एंड ये लोगों ये रखो 5 लाख मंथली रिटर्न का बिजनेस, क्योंकि उनका कैपेसिटी इधर तक ही हमने वो देख लिया कि इनका कैपेसिटी 1 लाख टू 3 लाख के रेंज का ही है जो रिटेनर देता है। लेट्स से अगर हमको अभी और ज्यादा बड़े लेवल पे जाना है, तो इवेंचुअली वी हैव टू टेक अ स्टेप एंड फाइंड आउट न्यू ग्रुप्स, जहां पे मे बी अगर पैसा भी देके जाना पड़ रहा है तो भी इट्स ओके, बट देन दिस गाइस शुड बी लेट्स से 50 सीआर मंथ का रेवेन्यू वो लोग करते हैं, एंड दे हैव अ गुड डीप पॉकेट्स। बट अगेन इवेंचुअली हमको हमारा एटीट्यूड सेम ही रखना है कि व्हेन वी जॉइन द ग्रुप, अगेन वी हैव टू ट्राई टू हेल्प देम कि यार इनके प्रॉब्लम किस तरीके सॉल्व हो सकते हैं। सो दिस इज हाउ नेटवर्किंग हेल्प लाइक टू गिव अ गुड अमाउंट ऑफ क्लाइंट्स टू न्यू एजेंसी। और उन्होंने लाइक आउट ऑफ द वे जाके वो 1 लाख रुपए स्पेंड किया। लाइक हम बोलते ना कि हम एजेंसी कहाँ पे पैसा डाले, लाइक ऐड करे, ये करे, कोई जरूरत नहीं। कुछ अच्छे ग्रुप्स लेके अगर हमने वहां पे, जैसे अपने क्लब मेंबरशिप ही है, लाइक हमको लगता है नीच मार्केटिंग क्लब मेंबरशिप है, अरे वो सोचते रहते हैं कि क्यों हम मेंबरशिप में पैसा डालें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक इवन आई हैव पेड $1,000 ऑल्सो, $1,070,000, लेकिन उस क्लब में जाने के बाद विद इन द स्पैन ऑफ 3 मंथ अराउंड मैंने उतना रिकवर भी कर लिया था। लाइक व्हेन आई हैव इन्वेस्टेड $1,000, बट विद इन द स्पैन ऑफ 3 मंथ, जस्ट द ओनली थिंग इज मैंने कभी पिच नहीं किया। व्हेन लाइक अगर कोई वहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है तो जस्ट वहां जाके अगर उनको हेल्प कर दिया कि अच्छा फेसबुक एड्स में ये प्रॉब्लम है तो क्या कर सकते हैं, तो वहां पे अगर सोल्यूशन दे दिया कि आजकल ये अच्छा चल रहा है, ओके, मे बी समबडी विल आस्क यार ये टूल कोई अच्छा है क्या, तो हमने 2-3 टूल्स को सजेस्ट कर दिया। या फिर कोई अगर बोले कि यार आई स्टक एट दिस प्लेस, मे बी इफ समबडी कैन कम ऑन गूगल मीट और समथिंग एंड जस्ट ट्राई टू हेल्प मी कि यार ये एरर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जनरल एक्टिविटीज चालू रखी, एंड 3 महीने के अंदर अंदर हमको 2 कस्टमर ऐसे मिल गए जिन्होंने, जो हमारा इन्वेस्टमेंट तो रिटर्न आ ही गया, ऊपर से प्रॉफिटेबल भी हो गया। सो लेकिन इनिशियल स्टेप हमने लिया। मेरे को भी याद है कि हम दोनों में एक प्रोजेक्ट में भी साथ में काम यस यस यस, हम दोनों ने एक प्रोजेक्ट हमने भी एग्जीक्यूट किया था। राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट गौतम जी, वही है, वही ग्रुप। बट लाइक उस ग्रुप में घुसने के लिए लाइक $1,000 देना पड़ा था। एंड व्हाट इफ कुछ नहीं होता तो, लेकिन क्या कुछ नहीं होता तो क्या फिर मैं मेरा बिजनेस कैसे ग्रो करूं? फिर आई हैव टू फाइंड आउट। एंड एक चीज है कि अगर हमको अच्छा टिकट चाहिए, अगर हमको अच्छा रिटर्न चाहिए, तो उधर एंट्री का फीस भी होगा, एंड दैट इज गुड। वहां पे फिल्टर्ड ऑडियंस ही है ना, फिर वो तो सब सीरियस है। अगर उस क्लब में घुसने के लिए हमको 1 लाख 2 लाख कुछ डालने पड़ रहे हैं तो अच्छा है, वो तो फिल्टर ऑडियंस है, वो सीरियस है सभी के सभी। तो वहां पे अगर हम जानते कि यार हमारा सॉल्यूशन बढ़िया है,
लेट्स से मैं एक अच्छे से एक B2B का एक अच्छा मेरे पास केस स्टडी है, मैं अच्छे से आई कैन गिव गुड सॉल्यूशंस. तो देयर इज नो हार्म टू इवन पे एंड गो इनसाइड द ग्रुप, हैव अ डिस्कशन. लाइक नेटवर्क एज इन क्या सब लोग अपना प्रॉब्लम भी बताते रहते हैं, यार मुझे ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ. तो जब हमको लगता है कि हाँ इसका सोल्यूशन अपने पास है, तो वहां पे इंटरफेयर किया, नहीं किया तो जस्ट सुन लिया और अंडरस्टैंड कर लिया. अच्छा ठीक है, कोई और देगा सॉल्यूशन तो हम भी लर्न कर सकते हैं कि अच्छा ये प्रॉब्लम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं. लाइक 90% तो लर्निंग ही होता है. हम कौन सा हर प्रॉब्लम जाके सॉल्व कर सकते हैं, ये तो नहीं होता. तो 90% लाइक किसी ने क्वेरी डाला, कोई और रिप्लाई करता तो हमको लगा अच्छा ये उसका सोल्यूशन है, ओके ये हमारे लिए भी नया था, ओके दैट्स गुड. सो एक तो लर्निंग तो एडिशनल है, बट इवेंचुअली मैं तो सोच रहा हूँ कि यार वो ROI ही है कि यार क्या मैं रिटर्न कर पाया, इतना मैं इन्वेस्ट डाल रहा हूँ. और अभी जाके ऐसा लगता है कि एक सर्टन लेवल के बाद वी हैव टू कीप चेंजिंग द नेटवर्किंग ग्रुप्स. लेट्स से अगर हमको लगा कि नहीं मेरे को और बड़ा टिकट साइज चाहिए, तो वी हैव टू फाइंड आउट अनदर नेटवर्किंग ग्रुप जहां पे वो टिकट पे करने वाले लोग वहां पे हैंग आउट करते हैं. उस क्लब के अंदर जाने के लिए अगर हमको थोड़ा इन्वेस्टमेंट डालना पड़ रहा है, डाल दो, अंदर घुस जाओ, डू दैट सेम थिंग एंड गेट मोर कस्टमर्स. और आपके पुराने नेटवर्क्स भी आपको देते ही रहते हैं, लाइक दे बिकॉज आपने इतना टाइम एक साल 1.5 साल डाला है, तो आपका नाम वहां पे बन गया होता है. दे कीप कॉलिंग यू फॉर द प्रॉब्लम्स कि यार ये हुआ है, कुछ हो सकता है क्या, सो ये इस तरीके से मैं नेटवर्किंग को सोचता हूँ. या तो नीलेश जी सही है आपका लेकिन जो अगर एजेंसी एंगल आपका जो पॉइंट ऑफ या व्यू एजेंसी एंगल से तो मैं इस तरीके से हाँ इस तरीके से सोचता. लेकिन जैसे मेरा मैं पर्सनली SaaS कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ. तो SaaS कंपनी के साथ जब काम कर रहा हूँ तो मेरे लिए तो ये इतना निश मार्केट है, उसमें भी वर्टिकल है, इसमें भी वर्टिकल है गेमिंग का, तो और भी कम हो जाता है. लाइक अगर हम दुनिया भर में वो हाथ में गिनने जैसी कंपनीज हो जाती है, तो मुझे तो ऐसे मामलों में तो मुझे नेटवर्किंग के सिवा कोई चारा ही नहीं होता. लाइक आई हैव टू लाइक अभी दिल्ली जाके आया, हैदराबाद जाके आया, क्योंकि मुझे उसके सिवा फिर तो अभी कोई देयर इज नो अदर वे, बिकॉज मैं इतने निश मार्केट में काम कर रहा हूँ कि आई हैव टू गो पर्सनली मीट देम. तो मुझे बेनिफिट क्या होता है व्हेन आई कॉल देम और मैं उनको रेफरेंस देता हूँ कि अरे हाँ हाँ हम हैदराबाद में मिले थे, तो मेरा ना एंट्री बहुत आसानी से हो जाता है ऑन द कॉल. लाइक वो बोलता है कि अच्छा ये वही आया था जहां पे मेरा एक स्टॉल था, ओके. तो वहां का CEO भी आके मीटिंग में बैठता है, बिकॉज दे सी द सीरियसनेस कि यार नहीं उन्होंने इतना लाइक दिस कंपनी फ्रॉम लेट्स से मुंबई, दे केम टू हैदराबाद एंड वी मेट देयर. तो खाली वहां पे एक वर्बल एक्सचेंज हो गया एंड देन इफ वी टेल देम कि यार नहीं हम मिलते हैं, चलो एक नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स में विल अगेन कनेक्ट और देखते हैं वर्कआउट होता है. एंड व्हेन वी कॉल देम तो एक अच्छा रैपो रिसेप्शन बन होता जाता है है. और हाँ तो इवन दैट हेल्प. सो वेदर इट इज ऑनलाइन वेदर इट इज ऑफलाइन, नेटवर्किंग तो है, बेनिफिट देता है. या तो थैंक यू नीलेश जी. मुझे लगता है कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जो जितना शेयर किया उसमें से मुझे की टेक अवे जो मुझे लगा, लाइक बाकी जो चीज़ बाकी लोग भी कवर किए थे, बट एक थोड़ा इंटरेस्टिंग जो चीज़ है जो मेरा तो ये 100% पार्ट ऑफ चार्ज बी a part of paid groups and all learning groups and हमारा all. कार्ड का. वो यस यस वो एक एंगल है जो मुझे लगता है आजकल काफी काम कर रहा है. That is something which is actually working. चार्जर की. Maybe that is there. And या ये वर्क किया है. लाइक आई हैव टेस्टेड दिस विद एटलीस्ट 3 पेड ग्रुप्स, और मुझे अभी कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो तीनों टाइम पे कि यार मैंने पैसा डाला और मुझे रिटर्न नहीं आया. definitely दैट आता है. ऑलवेज गिव द रिटर्न्स. यार जितना डाला है उतना तो वापस आ ही जाता है, प्लस एक नेटवर्क बन जाता है. एक Yeah. कभी भी कुछ रिस्पॉन्स करना है, कभी कुछ हेल्प चाहिए तो वहां पे जा सकते हैं. तो फ्री पेड विच एवर इट इज नीड टू लेवरेज ऑल द पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज. ठीक है. Okay, so I have a question then to Nancy. anybody who can answer this. Yeah, If it is Nilesh ji, then please feel free to do that. How do you identify which are the ones that you want to do? Yeah, this is the question I was also putting up to Prasad ji also. यस. तो अभी हमने क्या किया था, लाइक जैसे मैं एजेंसी का ही एग्जांपल लेता हूँ. तो जो एजेंसी था ना उनको लाइक हमने बहुत कोशिश किया था कि यार कहीं निश डाउन कर सकते हैं क्या, बट अनफॉर्चुनेटली वो बोल रहे थे नहीं हम फुल सर्विस ही देंगे. और दे विल गिव सोशल मीडिया, दे विल गिव लेट्स से फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, ये 3 प्राइमरीली वो कर ही रहे थे.
सो हमने सोचा कि ठीक है, अभी अपने करंट कस्टमर्स कौन है, अपना टिकट साइज क्या है। तो उन्होंने बोला हमारा मंथली रिटेनर 30,000 से लेके 50,000 तक का है, कि यार मिनिमम 30,000 भी चलेगा, या फिर हमारा मैक्सिमम 50,000 तक का है, क्योंकि उससे ज्यादा हमको कोई देता नहीं है, बिकॉज वी आर यंग। हमने किसी को ऐसे 1,00,000 2,00,000 भी डाला तो, क्योंकि हम ऐसे निच निच सर्विस भी नहीं दे रहे कि हम वही दे रहे, फेसबुक एड्स दे रहे, सोशल मीडिया दे रहे। तो हमको ये पता चला कि अच्छा यार, एक 25 CR का जो बिजनेस कर रहा है ना, वो अपना सोशल मीडिया एड्स ये सब कुछ रन करेगा। वो रियल एस्टेट कंपनी हो सकता है छोटा मोटा, ओके, वो अपना सिक्योरिटी का बिजनेस हो सकता है। तो हमने देखा कि अच्छा ये सारे बिजनेस कहाँ पे आते हैं। तो हमको ये पता चला कि ये सारे बिजनेसेस एक एक ऐसा क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं जिसका फीस ऑलरेडी 2 लाख to 5 लाख है। तो हमने पता चला कि तजुर्बा का फी 2 से 5 लाख रुपए का फी है, जहां पे वो बिजनेस ग्रो करना सिखाते हैं। तो हमको पता चला कि यार ये लोग अगर अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए 2 से 5 लाख रुपया एक क्लासेस को दे रहे हैं, वो तजुर्बा इंस्टीट्यूट को दे रहे हैं, तो हमको ये पता चल रहा है कि उनका स्पेंडिंग कैपेसिटी है और उनको ग्रो भी करना है, दे वांट टू ग्रो ऑल्सो। तो हमने हमने तजुर्बा के साथ टाई अप किया कि ठीक है, हम लाइक विल नॉट टेक कोर्स फ्रॉम यू, बट जो मार्केटिंग रिलेटेड जो आपका आर्म रहेगा ना, वहां पे हम कंट्रीब्यूट कर लेंगे। तो उन्होंने इवेंचुअली बैठ के हमने फिगर आउट किया कि वो 1 लाख रुपीज में वी कुड एंटर इनटू द क्लब, वी डोंट नीड टू बाय द कोर्स। और उन्होंने अपॉर्चुनिटी भी दिया कि ठीक है, आप आके अपना पिच भी कर लो, आप अपना पिच कंपनी और सर्विसेज को पिच भी कर सकते हो वेन एवर वी मीट। तो जब हमको ये ग्रुप मिला जहां पे लाइक एक 100-150 लोग एक मीटिंग में आते थे, और फाउंडर्स, डायरेक्टली फाउंडर्स आते थे। तो जब फाउंडर्स आते थे तो हमको पता चला कि अच्छा इनको डिजिटल बिजनेसेस के बारे में ज्यादा पता नहीं है। ये वही है, थोड़ा सा एज ओल्ड टाइप का ग्रुप है, 45-50+ के फाउंडर्स है, उनको डिजिटल नहीं समझ आता, एंड दे नीड सम हैंड होल्डिंग। कोई उनको बता दे कि यार ये हम किस तरीके से कर सकते हैं क्या। लाइक उन्होंने सब सुना है, फेसबुक एड्स रन करना चाहिए, सोशल मीडिया मैनेज कर लेना चाहिए हमको। तो वहां से हमने लाइक वहां पे एक पर्सन थे जिनको अपना ये लॉन्च करना था, वाईफाई का कोई डिवाइस था, ओके, कोफ करके उनको लॉन्च करना था। तो उन्होंने वो लॉन्च करना था, तो उन्होंने हेल्प ले लिया कि अच्छा ठीक है, मेरे को ना डिजिटली आई नीड टू बी वेरी स्ट्रांग इन डिजिटल, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर वो सब नेटवर्क है, बट डिजिटल पे मेरे को आता नहीं है, तो आप मुझे हेल्प कर लो उसके लिए। एंड देन लाइक उसका बिजनेस अच्छे से ग्रो कर रहा था, तो ही पेड अस लाइक क्वाइट गुड अमाउंट ऑफ मंथली रिटेनर। तो हमने फाइंड इस तरीके से किया कि ये लोग कहाँ पे हैंग आउट करेंगे। तो हमको पता चला कि अच्छा ये लोग ऐसे बिजनेस ग्रो करने के लिए क्लासेस करते हैं, ओके, जहां पे Yeah, but 5 लाख that's what रुपए तक जाते हैं। but that's Yeah. what I'm asking you. How did you reach there? As in, is So there I'll tell like you, someone mentioned it to you Mansi, or what? हाँ बोलो. हाँ sorry interrupting. Sorry, Nilesh ji. हाँ, तो बोलिए ना। तजुर्बा की एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तजुर्बा इज एन एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ BNI. The owner Suresh and Uma, they are ex BNI members from BNI करेक्ट Gurgaon. करेक्ट ठीक करेक्ट। है, and they have pretty much replicated all of it. कहीं ना कहीं सेम फिलोसफी, सेम फंडे, सब कुछ सेम है. And it's सब कुछ all सेम about, है, it यस। is all about just meeting the right people. अभी BNI में भी या तजुर्बा में भी, there are different regions, different chapters, and I know for a fact that हो सकता है मेरे चैप्टर में मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा हो, लेकिन मैं ही अगर मेरे रीजन के दूसरे चैप्टर में होता, हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट होता. So it's about how many people are there in that group and who all are coming with an intention of connecting practically. करेक्ट सो करेक्ट। इसका कोई गारंटी नहीं है कि आप कौन से ग्रुप में जाओगे. तजुर्बा में आज आप तजुर्बा ज्वाइन कर लो, हो सकता है आपका ग्रुप के जो 20 लोग हो वो उतने हेल्पिंग ना हो. तो इसका कोई आंसर नहीं है. एंड नीलेश जी, जो आपका था कि यू वेंट एंड पेड अप $2,000 एंड आपको उतना रिटर्न मिला. मैं इस बात को बस इतना क्लैरिफाई करना चाहूंगा. मुझे नहीं पता, अब तो यहाँ 6 ही लोग बचे हैं जो सारे ही कोर नेटवर्क कर रहे हैं, और तो कोई बचा ही नहीं है. बट हाँ, बट देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक YPO. 10,000-10,000 का फीस है, 15,000 का है, फीस बेस्ड ऑन योर बिजनेस revenue and all of that. And I have known people who have invested for three years like $50,000 and with zero returns. So it is not just about moving in the right circle, but also upkeeping yourself
to their level so that they can trust you. अगर अगला Correct. बंदा 500 करोड़ का बिजनेस चला रहा है तो उसे कुछ तो मुझ में दिखना चाहिए कि वो आए, नहीं तो कल को सच Absolutely में right. कोट Absolutely right. अनकोट मन में यही फीलिंग आती है कि ये तो फटीचर से आ गया, पता नहीं कहां से आ गया, इससे नहीं करना। Correct. Correct. 100% I agree with you. इस वजह जैसे से ना मैं मैंने हमेशा हमेशा ये वाला एग्जांपल हमेशा देता हूँ। ये हम हमारा भी देख लो ना, खूब जब हम लेट्स से वी आर डूइंग 2 लाख अ मंथ, तो हमारा जो फॉर एग्जांपल लेते हैं, जीन्स जो होगा ना, तो 2 लाख अ मंथ जो अर्न करता है, तो उसका जीन्स समझो 3000 रुपीज का होगा। लेकिन अज्यूम करते हैं कि वही बंदा अगर वो अगले साल अगर वो 5 लाख अ मंथ कर रहा है, तो 2000 की जीन्स तो वो लेगा ही नहीं ना, अब तो वो 4000 या 5000 का जाके स्पेंड करेगा। सो वेंडर एंड क्लाइंट शुड मैच द इक्वेशन। जब हम अननेसेसरी बहुत बड़े ग्रुप में जाते हैं ना, तो हमको पता है कि यार वहां पे हमारा फेल हो nobody, जाएगा। ये मैंने ना, ये आई हैव एक्सपीरियंस दिस व्हेन आई हैव डन द नेटवर्किंग विद द रियल एस्टेट बिल्डर्स। और मैं डायरेक्टली कोलते पाटिल और पुणे के जो ये एबी करके है, अभिजीत पाटिल, ये सब ग्रुप है, इनके साथ जाके उनके मीटिंग में बैठा था और उनके साथ बात भी हुआ, तो मुझे लगा शायद अभी यहाँ पे होगा ओके कुछ ना कुछ तो कन्वर्जन। बट इवेंचुअली पता चला कि नहीं, ये सीईओ का कोई दोस्त है जिसका एजेंसी है, और वो सारा का सारा रेवेन्यू वहां, मतलब सारा का सारा बजट उनको ही जाएगा, because they were already giving the budgets to the agencies, those who were in the, मतलब वो उनके सर्कल में थे, लाइक वो एक साथ गोल्फ खेलते होंगे, एक साल एक साथ किसी क्लब में होते होंगे, उन्होंने कंसीडर ही नहीं किया मुझे, जबकि अच्छे से बात हो रहा था। तब पता इससे चला आपने कि याद देयर इज दिलाया, नो गोल्फ पॉइंट। इज अ वेरी गुड नेटवर्किंग प्लेस मानसी, चले जाओ कौन सा गोल्फ? Sorry, गोल्फ, गोल्फ just क्लब? just join golf coaching that's center the ही। only sport that I don't mind playing. अरे बहुत डिफिकल्ट है यार, बहुत डिफिकल्ट I है, know, मैं I 3-4 know. बार ही गया हूँ, वाट लग जाती है, ऐसा लगता है थकते नहीं है लेकिन इतना दर्द हो जाता है शरीर। No, I think my question was missed, Prashant. नहीं I was not मैं asking. I was not मानसी, asking that. Yeah, I was yeah. asking, मानसी how do you Neeraj ji, identify the groups let us that you would like actually to? give Mansi the time, and also let us also allow others to also add their. ठीक है ठीक है, आप मतलब मानसी, जस्ट एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। मानसी, आपका एजेंसी ही बिजनेस है राइट? Yes. और आपके क्लाइंटेल का कुछ ऐसे सर्टन रेवेन्यू होता है क्या, कि ओके इतना रेवेन्यू करते हैं तो आपका सर्विस वो अफोर्ड कर सकते हैं? Yeah, around from 100 crores to तो 1,000 100 crores. 100 सीआर प्लस, सो ये 100 सीआर प्लस के ये जो ओनर्स है ना, ये दे जॉइन सम सम क्या मैं बोलूं, सम नेटवर्किंग एवेन्यूज। जैसे कि अगर कोई आई डोंट नो, मे बी कोई सेल्स के सेशंस होते होंगे, या फिर हाउ टू ग्रो बिजनेस वाले सेशंस होते होंगे, वहां पे ये लोग जाते हैं। दीज पीपल गो एज अ लेजर हॉलीडे, लेजर क्या उसको बोलते हैं हम, लाइक लेजर का लेजर नेटवर्किंग होता है ना, कि यार कहीं लोनावला चले गए, या फिर कहीं एक सर्टन घूमने के लिए चले गए, वहां पे नेटवर्किंग कर लिया। तो हमको पता चला कि ऐसे ग्रुप्स में ये लोग जा रहे हैं, तो वी हैव टू ज्वाइन सच टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, जहाँ पे ये लोग जाते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, and we'll have to do those exchanges with the business people। तो हमको ये फाइंड करना ही पड़ेगा कि where these guys are going। हमको हमारा तो पता चल गया था कि हमारा टिकट ज्यादा है ही नहीं, तो हमारा तो क्या 25 CR इज नथिंग, लाइक एसएमईज भी कर लेते हैं। तो एसएमईज हमको पता चला कि कौन कौन से ग्रुप में जा रहे हैं, तो हमने 2 निकाल के रखे थे। एक संतोष नायर, मुंबई में वो फेमस है, ही इज ऑल्सो सेल्स एक्सपर्ट, उनके पास बहुत सारा डेटा है, या फिर बहुत सारे लोग उनका सेशन अटेंड करते हैं जिनका इतना रेवेन्यू होता है। और एक ये हमको ये मिल गए थे तजुर्बा वाले, तो हमने एक चूज कर लिया, वहां पे गए, एंड देन वी गॉट इट। सो आपको ये जानना तो पड़ेगा ऐसा, व्हाट आई थिंक यू हैव टू फाइंड आउट कि वेयर दिस गाइज आर हैंगिंग आउट। ये Got it. दिस इज व्हाट आई कुड से, मे बी अदर गाइज कैन कंट्रीब्यूट। Got it. आई थिंक मानसी का जो मतलब जो भी क्वेश्चन है, आई थिंक इट विल बी लाइक इट्स गुड टू एड्रेस इट इन पर्सपेक्टिव ऑफ फॉर एवरीवन, क्योंकि मानसी का जो सर्विस भी काफी निच है, सो दैट इज वन मानसी, मोर तो 2 चैलेंज। चीजें हैं, 100 करोड़ कोई आज की डेट में बहुत बड़ा अमाउंट नहीं बचा ऑनेस्टली, ठीक है। सो एवरी सेकंड पर्सन आई मीट इज 100 करोड़। That, And maybe I should be I should be tailing you everywhere.
नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं मैं उसका रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इंडस्ट्रियल एरिया में हूँ, ठीक है, मैं नोएडा के इंडस्ट्रियल एरिया में बैठता हूँ। माय डैड इज एन इंडस्ट्रियलिस्ट हिमसेल्फ। और इंडस्ट्रियल एरिया में कोई भी आदमी अगर उसके पास छोटे से छोटा समझो 300 मीटर का प्लॉट भी है, तो 10 15 20 करोड़ का तो प्लॉट ही हो गया। आप समझ रहे हो? और जो आदमी अपना प्लॉट खरीद के बैठा है वो कुछ तो टर्नओवर कर ही रहा होगा ना। 20 करोड़ का प्लॉट खरीद के बैठा है, तो ऐसा तो है नहीं कि 10 20 लाख कुछ कर रहा होगा। तो वी हैव टू फोकस ऑन इंडस्ट्री। Yes. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत बहुत ऑब्वियस हिंट्स मिस कर देते हैं। हम लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वाइब पे। एक्चुअली एक अदर फंडा भी है नेटवर्किंग का, कि जितने नेटवर्किंग वाले जितने ग्रुप्स में लोग आ रहे हैं ना, सब खेले खिलाए लोग हैं। एक बहुत बड़ी जनता है जिसको आपकी जरूरत है, और जो आपको पैसे देने के लिए बैठे हैं, आपको इज्जत के साथ पैसे देंगे, लेकिन वो यहाँ नहीं मिलेंगे। यू हैव टू गो गली गली, गांव गांव, बस्ती बस्ती, मीट देम, एंड दैट्स Agree, हाउ इट agree, हैपेंस। agree, agree. दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। और मेरे कुछ जो सबसे बड़े क्लाइंट रहे हैं, वो किसी भी उसके वो नहीं है। अच्छा, इंपॉर्टेंट स्टडी, एंड आई एम श्योर यू ऑल बिलीव इन स्टडीज एंड रिसर्चेस मोर देन मी। सो most networking in the world happens in religious places and biggest. Exactly. We are missing that out. Yeah. तो नेटवर्किंग का ना कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है, मैं मानता हूँ। दिस इज माय पर्सनल बिलीफ। Yeah. मैं आज Correct. के दिन में पर्टिकुलरली किसी भी प्लेटफॉर्म से नेटवर्किंग नहीं, और मैंने छोटे से छोटे प्लेटफॉर्म से बहुत बड़ी बड़ी डील्स निकाली है, बहुत बड़ी बड़ी डील्स निकाली है। तो नेटवर्किंग कहीं भी होती है, मंदिर में, पार्क में, सड़क पे, पड़ोसी से, रिश्तेदारों में। You don't have to find people to network, you just have to network. That's the thing. Hmm. So you should know how to network effectively. वही बात है. Yes. And how to network effectively is nothing. Mansi, I talk about, she's got enough confidence, she does command over subject, she knows what she's saying, and she knows how to chill around. That's all. What else do you need for networking? Nothing more. Honestly. And don't be very, क्या बोलना चाहिए, pushy to others, like ना trying. पुश तो करके कभी मिलेगा ही नहीं ना, वो तो नहीं. आपका ही रेट गिर जाएगा। हम्म. पुश मत करो, लेकिन शाय अबे भी मत करो बोलने से। एटलीस्ट मैं नहीं करता, मुझे औरों का नहीं पता, मैं नहीं करता। I think there are a lot of takeaways from today's this thing. What I'm observing is like मैंने note किया है 10-15 चीजें and I felt like yeah, definitely जैसा प्रशांत जी बोल रहे, जो मुझे भी कई बार लगा ना, networking, real networking happens in नॉन ऑब्वियस प्लेसेस, लाइक जहाँ पे नेटवर्किंग करने के लिए आप नहीं गए फिर भी नेटवर्किंग हो जाता है. लाइक आई वेंट टू माई डॉटर स्कूल द अदर डे. तो कुछ उसमें क्या हो रहा था, मैं कार खड़ा किया वहाँ पे, थोड़ा बहुत गर्मी था वहाँ पे. तो मैं क्या किया, कार का पूरा सब दरवाजा खोल दिया, सो दैट डोर्स खोल दिया, सो दैट एटलीस्ट थोड़ा फ्रेश एयर पास होगा, देन आई कैन स्टार्ट द कार. देन वन गाई जस्ट वाज पासिंग बाय मी एंड ही सेइंग इट्स अ गुड आइडिया बोल रहा है. एंड बोला, मैं सोचा कोई और पेरेंट होगा दूसरा. देन आई स्टार्टेड सेइंग लाइक, हाँ इतना गर्मी हो जाता है ना कार के अंदर, तो ये मुझे इजी लगता है बोला. And he's saying that my car is not as eco-friendly as yours. क्योंकि उसका कार का दरवाजा अपना बंद हो जा रहा है. लाइक मेरा कार का दरवाजा खुला रहता है बट वो बंद हो जा रहा है. उनके पास टाटा मांजा या कुछ है, टाटा का कुछ गाड़ी है. देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम. अच्छा आप क्या करते हैं, व्हाट इज दैट एंड ऑल, आपका बच्चे है तो पढ़ते हैं क्या? नो नो, वो बोलने लगा कि इज इनटू इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स. तो उन्होंने कंपनी में वहाँ पे इको फ्रेंडली बैग्स स्कूल के लिए कुछ बेचने के लिए आया हुआ वहाँ पे. सो देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम एंड देन हाँ कुछ बात हो रहा, कुछ एक्सचेंज हो गया. ही गॉट क्यूरियस, लाइक मैं क्या करता हूँ, मैं बोला कम्युनिटी बिल्डिंग करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ. कम्युनिटी, ओ इंटरेस्टिंग बोला. फिर बात किया, उसका दोनों कार्ड्स एक्सचेंज हो गया. So we didn't expect that to happen. This happened like 2-3 days ago. I don't know what will convert or not, but non-obvious places maybe kabhi without even having that intention also sometimes it happens. So maybe this I'm just sharing it. काफी लोग experience किए होंगे, but this is a latest experience which I am trying to share जो हुआ था बस. नहीं, मेरे साथ भी हुआ है। द्रव्य के स्कूल में नेटवर्किंग होती है, नेटवर्किंग कहीं भी होती है. And this type of non-obvious places में it एंड अगेन, जैसा अभी नीलेश जी ने कहा
कि अगर पैरामीटर्स ही देखने हैं तो पैरामीटर्स तो वो भी है ना कि भाई जब मैं अपने बच्चे की फीस भर रहा हूँ 20,000 रुपए महीना, तो अगला बंदा भी तो भर रहा होगा, तो कुछ तो कमाई रहा होगा। Yeah, राइट। at a तो level एज that सिंपल पैरामीटर्स अगर देखने हैं तो, लेकिन पैरामीटर्स देख के कभी नहीं होता, क्योंकि जरूरी नहीं है जिसको आप पिच कर रहे हो वही आपका क्लाइंट है। उसका भाई, बंधु, रिश्तेदार, जानने वाला कोई और कई बार तो नेटवर्किंग ऐसे भी हुई है कि मतलब मुझे नहीं पता आप कितने लोग एक्स एम्प्लॉय से नेटवर्क करते हो, बट दैट्स आल्सो क्रूशियल। मेरे एक्स एम्प्लॉय ने अपने किसी कोलीग को बोला, उसने अपने ओनर को बोला। okay. क्योंकि कई बार होता है ना, आपको कुछ चाहिए, आप अपने एम्प्लॉय से पूछते हो यार ये बंदा कहाँ से लाऊं, यार ये चाहिए मेरे को। तो ऐसा भी मिलता है, कुछ नहीं है तो नेटवर्किंग कहीं से भी हो सकती है। अच्छा, Anyways, ये तो endless है। वन इंटरेस्टिंग फैक्ट था। मैं लाइक पैंडेमिक के पहले की बात होगी शायद, ओके। तो एक अहमदाबाद में ग्रुप था, सो एट दैट टाइम आई वाज इन द कंपनी जहाँ पे उनका आईटी डिपार्टमेंट भी था। सो हमने सोचा कि यार आईटी का सेल्स ग्रो करना है, तो अहमदाबाद इज वेरी एक्चुअली हॉट प्लेस आईटी प्रोजेक्ट एंड एवरीथिंग। तो उनका बिजनेस अच्छे से ग्रो हो रहा है एंड दे आर हैविंग ऑल लाइक इंटरनेशनल कस्टमर्स। तो हमने सोचा कि let's find out someone who is actually coaching to all IT sales department और CEOs। तो हमने वैसे एक फिगर आउट किया कि अच्छा there is somebody who is actually coaching, एंड उसके साथ भी बात हुआ, फिर पता चला कि अच्छा उनका एक अगले महीने या कुछ आ रहा है। सो फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद आई वाज ट्रैवलिंग फॉर टू मंथ, लाइक उनका वो था कि एवरी सैटरडे संडे विल कैच अप, एंड वहां पे वो बताएंगे भी। तो वहां पे अराउंड लाइक 30 कंपनीज के सारे सेल्स हेड या फिर सीईओज सब आए थे। लेकिन फिर 2.5 months आई शुड गो फ्रॉम मुंबई टू अहमदाबाद, एवरी फ्राइडे नाइट जाओ और संडे रात को वहां से आ जाओ। 2-2.5 महीने का था वो सेशंस वगैरह वो सब चलते रहे, बट इवेंचुअली वो रिलेशन इतना अच्छे से बिल्ड हुआ है, लाइक वट एवर वी हैव इन्वेस्टेड, लेट्स से वहां पे वो सेशन के लिए हमने कुछ 30,000 रुपए डाले थे, एंड देन अगेन लाइक माई ट्रैवल स्टे वगैरह सब कुछ मिला के शायद हमने ₹1,00,000 के आसपास खर्चा किया था। बट इवेंचुअली वो रिलेशन तो आज तक है, आज तक मैं उस ग्रुप में हूँ जो कि बहुत प्राइवेट ग्रुप है, और वहां पे हमने इतने तो एम्प्लॉइज दे चुके हैं कि हमारा जो 1 लाख वो तो कब का ही लाइक विद इन फर्स्ट 6-7 मंथ ही हमने वहां पे एक रिटेनर मॉडल वगैरह भी चालू किया था, एंड वी ऑल्सो लर्न सम न्यू थिंग्स, बट ऑल्सो लाइक दैट ग्रुप इज स्टिल आई एम लाइक बहुत अच्छे से उनके साथ वो कनेक्टेड हूँ। So again, it was an investment from my side and little bit of effort also. Like 2-2.5 महीने मुंबई टू हैदराबाद ट्रेन से ट्रैवल करो, बैठो वो सारे सीईओज के साथ, उनको अपना प्रॉब्लम बताओ, वो अपना बता देते थे। इवेंचुअली हमने कहीं जाके एक बिजनेस डील्स भी कुछ क्रैक कर लिए है, और नई नई चीजें भी मिली है। अगेन दिस इज पार्ट ऑफ काइंड ऑफ नेटवर्किंग, like learned new things, also got the business opportunity. yeah, that's an interesting experience, Neeraj ji. सही है, मतलब like whatever ना, I think you also have taken like steps कि कहाँ क्या हो सकता है, and I think learning groups and learning programs definitely are a good network, and आज की डेट में especially when you're able to network in a group, learning groups especially, क्योंकि अब्रॉड का कोई लर्निंग ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो, गैरी वाइनरचेक का एक ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर सकते हो, देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज ओपनिंग अप। मैं एक्चुअली Yes. राजगोपाल को अभी तक ना आई कुड नॉट मैनेज टू आस्क हिम। राजगोपाल, डू यू वांट टू शेयर एनीथिंग? Good evening, everyone. Good Yeah, evening. Rajgopal, good evening. Just tell. Sir, I'm just listening and great points coming from everyone. So, आपकी तरफ से कुछ बोलना चाहोगे, लाइक यू वांट टू ऐड टू दिस डिस्कशन? recent नेटवर्क ये ऊपर मैं बताऊं तो अभी जस्ट 2 या 3 वीक से पहले मैं अपना लैपटॉप रिपेयर करने के लिए एक स्टोर गया था। तो वहां पे से बातचीत में उनको मतलब उनके बारे में पता चला कि उनने अभी एक स्टोर खुला है, मतलब लैपटॉप शोरूम। तो उनको एचसीओ का सर्विस चाहिए। तो एक दिन में उनके साथ नेटवर्क हो गया। उनका जो हेड टेक्नीशियन था, उसके बाद उनका जो उनका हेड है कंपनी का, उनके साथ वो मीटिंग फिक्स कर ली है। तो उनका 4 स्टोर है एक एरिया में, 4 रिपेयरिंग स्टोर, एक शोरूम है लैपटॉप मोबाइल और इस सब के लिए। तो उन शायद कोई उनके जान पहचान को सर्विस केसीओ के लिए दिए हैं, लेकिन
उनको इतना कन्विंस हुआ तो उन्होंने बताया कि ये अच्छे से वो रिजल्ट नहीं देते तो देन आई विल रिवर्ट बैक टू यू। तो मतलब वही, मतलब बस लैपटॉप रिपेयर करने के लेके गया था, लेकिन उनके साथ अच्छा मतलब नेटवर्क बिल्डअप हो। तो इस तरह रहता है, मतलब हम नहीं बता सकते कि हम बिजनेस जहाँ से देने गए हैं वहां से बिजनेस भी हम लेके आ सकते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, डेफिनेटली। एंड मैं अपना जब कैरियर स्टार्ट किया था तो पहले सेल्स में था, तो नेटवर्क, और क्योंकि हम जैसे एडुटेक में क्या होता है ना, जितना आप सेल करते हैं उतना रिफंड आ जाता है, मतलब तो सेल्स को रखने के लिए ज्यादातर हम कैसे पेरेंट्स के साथ अच्छा रिलेशन बिल्डअप करके रखते हैं, उसी के ऊपर सेल्स टिकता है। या तो सेल्स जब आप कोई कैंसिल करता है तो देन जो सेल्स टारगेट होता है वो डिक्रीज करता है, जो नंबर ऑफ सेल्स रहता है टारगेट। तो मेरा अर्ली स्टेज से वो एक्सपीरियंस था कि किस तरह मतलब लोगों से मिलते हैं, और मैं बियॉन्ड, मतलब ऐसे होता है ना कि किसी से बस काम के लिए आप रिलेशन रखते हो तो बहुत लिमिटेड टाइम के बाद वो खत्म हो जाता है, लेकिन जो रिलेशन एक अच्छा नेटवर्क के लिए, अच्छा उम्मीद के लिए बनता है ना, वो काफी आगे तक बढ़ता है। और आज भी मेरे उन पेरेंट्स के साथ अच्छा रिलेशन है, क्योंकि एडुटेक में काफी पेरेंट्स का खराब एक्सपीरियंस है मतलब प्रोडक्ट के साथ। लेकिन और जो बंदा झूठ भी बोल के लोग सेल करके आते हैं, मतलब लेकिन मैं जो बातचीत करता था, मतलब क्या हम सेल्स में ये सिखाया जाता है कि आप सच मत बताओ इस तरह रहता है। लेकिन एक अच्छा रिलेशन रहा अभी तक भी। कभी कोई पेरेंट्स के साथ, मतलब कोई भी चाहे जैसे मैं राजस्थान में था तो मैं नेटवर्क के अंदर उन वहाँ पे काफी जगह घूमा हूँ, मतलब उन पेरेंट्स के हेल्प में। और जहाँ पे जैसे वाइल्ड सेंचुरी है, वहाँ पे जैसे 3000 4000 या 5000 ले रहे हैं फॉरेनर से, हम 500 या 1000 से मतलब गए। एक पेरेंट्स, एक स्टूडेंट के उनके पेरेंट्स वहाँ पे जॉब करते थे गवर्नमेंट में, तो उनके थ्रू में हम लोग घूमे थे। तो यही चीज है कि नेटवर्क ये सब बहुत मायने रखते हैं बिजनेस के वर्ल्ड में। और ज्यादातर मैं बिलीव करता हूँ कि कनेक्शन, नेटवर्क, रिलेशन बियॉन्ड कोई कुछ मिलेगा मेरे को, ये उम्मीद में मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि ये रहेगा तो मतलब वो स्ट्रांग नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बन सकता है स्ट्रांग। तो आप क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं और आप कितना जो है रियल में वो आपको वहां पे रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरह रहता है। यस जो आप हो वही आप अपना दिखाओ, ज्यादा मतलब जी don't जी जी, क्योंकि लोग आप जल्दी से पकड़ लेंगे कि आप एक बार में नहीं, लोग आपको जल्दी से पकड़ लेंगे कि आप कुछ झूठ बोल रहे हो या कुछ आप मतलब कुछ मिला रहे हो बातों में। नहीं, वो ये जमाना तो गया वैसे। और लाइक दैट जी जी लॉन्ग बैक इट वाज हैपनिंग, लाइक पीपल यूज्ड टू टॉक एनीथिंग, कुछ भी बुलशिट बात करके कुछ बेच देता था। लेकिन आज की डेट में वो तो पहले से ही गया है, दैट इज ऑलवेज देयर। सो आई थिंक वैल्यूबल पॉइंट्स, राजगोपाल। सो एनीथिंग एल्स वी वांट टू ऐड? और अभी हम लोग ऑलमोस्ट 5-6 लोग हैं। वी कैन क्लोज द सेशन आल्सो। मेरे पास और कुछ पॉइंट नहीं है, जितने सब लोग ऐड किए हैं आई थिंक से मैं सबसे इट्स रियली ग्रेट ग्रेट नीलेश जी एंड प्रसन्न जी, पंकज जी, Mansi ji, they are added really great things. Thank you everyone. थैंक यू। गोवर्धन जी, ऐसा भी कुछ होता है क्या, आप हर उसके ये मीटिंग के बाद कोई पिज्जा कूपन या वाउचर भेजते हो कुछ? क्यों, अभी तक खाना नहीं हुआ क्या? अरे मैं भेजती हूँ ना, आप एड्रेस तो भेजो। एड्रेस तो भेज ही दूंगा मैं, कहाँ डेफिनेटली जितना आपने आज की डेट आज का सप्लाई ऑफ पिज्जा ना, कोई एलटीडी ले लो इसकी। मतलब पिज्जा सप्लाई करने का। हाँ नहीं प्रशांत गोद जी, जी, नीश मार्केट का कोई फिजिकल मीटअप हो रहा है क्या हैदराबाद में या बैंगलोर में, ऐसा कुछ अप्रैल में या जून के अंदर? I think all of us should go and go to Delhi and visit Prashant now. He deserves it. भाई, ये एक मीटअप कर लो। मैं तो सबको बोल रहा हूँ 2-2 दिन के लिए कहीं नैनीताल शिमला चलते हैं, वहां अरे पे चलो मीटअप चलो करें। चलो। सबसे बेस्ट आइडिया है प्रशांत जी। हाँ वेकेशन भी हो जाएगा साथ में। हाँ और क्या, सीरियसली। ये बोल ही रहा हूँ, दिल्ली से चलो, अपना बस करके चलते हैं, बस का मजा ही अलग है। तो सीधा गोवा चलते हैं ना फिर। अरे गोवा इज अ रॉन्ग डेस्टिनेशन। एक बार आके तो Goa देखो is पहाड़ों में। Goa is boring. Nainital is awesome. ओके। गोवर्धन जी को कसौल ले जाएंगे। वो नाम बहुत सुना हूँ मैं उसका, कसडोल की कसोल क्या है। मैं अभी कसोल। लास्ट ईयर गया था, बहुत अच्छा जगह है। नहीं भाई, राजगोपाल जी, आपको उनका